इंटरनेशनल वुमेन्स डे के इस खास मौके पर अभी हमारे साथ एक ऐसी ग्लोबल फैशन आइकन है जिन्होंने कैन से लेकर मिलान तक इंडिया को रिप्रेजेंट किया है. सो प्लीज वेलकम निकी मेहरा. हाउ इट ऑल स्टार्टेड? Well, honestly, I started 10 years ago. तब तो I think मुझे याद भी नहीं है if the creator economy looked like how it looks today. तब Instagram पे postings नई शुरू हुई थी. मैं बस ऐसी थी, ओके ठीक है मैं ये ट्राई करती हूँ. I don't even know ये क्या है. And then I guess I just never looked back. ओवर द इयर्स जो परसेप्शन है ग्लोबली अबाउट इंडियन वुमेन और उनके फैशन को लेके वो कुछ चेंज हुआ है? I definitely think वो change हुआ है, and I think like you said, people find this term very touchy when someone says, oh you're representing India. I think लोग अब बहुत seriously लेते हैं Indian fashion को, not just how Indian women dress. Definitely that perception has changed. When it comes to fashion content creation, इसके पीछे का जो पूरा बिजनेस है, tell me about it. This is basically just like any other business, you know. And the dressing up part and sundar lagna part and all of that is literally just the tip of the iceberg. I think there's an entire business model. Being a fashion creator, do you think कि वेल ड्रेस्ड होना या मेकअप करना या रेडी होना किसी भी एक इंसान के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए, उनकी सक्सेस के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है? जिसके लिए मेकअप या तैयार होना इम्पोर्टेंट है फॉर देयर कॉन्फिडेंस, उसको करना चाहिए. एंड जिसके लिए ये सब कुछ जिसको सुपरफिशियल लगता है उसको नहीं करना चाहिए. आई थिंक बोथ schools of thoughts are okay. What is not okay is the judgment around them. The young girls especially जो इस filter heavy world को real समझती हैं, so उनके लिए what is your message basically? I just think with the new generation, maybe they've just grown up with social media. So they've only compared or imagined life to be that perfect, and life I think is nowhere close to being that perfect. किसी की भी नहीं है, I guess. So I think like you said, social media entertainment के लिए use करना चाहिए, inspiration के लिए नहीं. All those people जिन्हें फैशन में इंटरेस्ट है, वो फैशन को लेकर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं या एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स, उनके लिए what are the tips that you want to give? I would just say, be consistent. I think that is the most important. This industry will test you. And secondly, I think you should not get intimidated by those who are already successful. I think that is something a newcomer always faces, because you look up to some idols and you look up to their work and you think their way is the right way, but there is no right way. And you just need to really believe in yourself and be consistent. That's pretty much it.